hello everyone, how are you all? I hope that you are going great. I am going absolutely amazing as well. I mean, this is something which I always say, isn't it? So, just for the introduction, my name is Aman Maskeen. I'm a vocab trainer on this channel and the channel name is Let's Talk English. And today what we have bought 3 words and we will be able to make you understand the sense of all these 3 words. And the best part is that each and every word comes up with its own level of understandability. Like, in order to make you understand, unwind, I mean in a click I'll be able to make you understand. This word is very easy. When it comes to nostalgic is a word जो हाँ यार हम बहुत बारी सुनते हैं कि लोग use करते हैं, but we don't know how to use it and when to use it, so that thing will be taken care of. The third word is makeshift. Makeshift is a word which is unique, and when you will be able to understand the actual sense of this word, which is makeshift, you guys will start using this word like from today only. So let's get started. Just suppose that there is one road, right? The road, and just next to that road it's your school, I mean where you studied. So whenever in your entire life now, whenever you gonna pass by that school, जब भी आप उस school से गुजरोगे तो I mean आप बस गुजरोगे नहीं, I mean you will look at your building of your school and you will be like, you will get that feel कि हाँ यार मैं स्कूल में पढ़ता था. It will be very mixed emotions. जब भी आप उस स्कूल से गुजरोगे you will be like कि हाँ यार मैं स्कूल में पढ़ता था, क्या यार वो भी क्या दिन थे. Like that, whenever anything which will take you to your past, anything when you will be having mixed emotions, when happiness and sadness will be combined, that feeling is known as nostalgic. Like suppose that you look at your childhood photographs and you feel like कि wow यार amazing, but you guys feel like कि यार वो दिन कहाँ है. Like this way, क्या यार अब हम बड़े हो गए, वो दिन कहाँ है. Like that way. Okay, we're gonna read one example. I felt nostalgic when I came back to India after 5 years. मतलब मैं 5 साल बाद इंडिया में आया. I mean I must be somewhere in the world. मैं 5 साल बाद इंडिया में आया and the moment I landed and I was like कि क्या यार मेरा बचपन यहाँ गुजरा है. I mean it's a very mixed emotions. Those emotions are known as nostalgic emotions, and nostalgic is an adjective. This word has been derived from the word which is nostalgia. The correct pronunciation of this word is nostalgia. It's nostalgia, not nostalgia, but it's nostalgia. Nostalgia itself means a feeling of happiness and sadness when you think about anything which will take you to your past. Like this way. Okay, suppose करो कि मैंने एक वीडियो देखी, ठीक है, एंड वीडियो को देखे हम कहते हैं ना यार I got a bit emotional, मैं ना थोड़ा भावुक हो गया. तो I can easily say, अगर कोई ऐसी वीडियो है जो वहाँ पे क्लासरूम की कोई वीडियो है या फिर कॉलेज की वीडियो है जहाँ पे मैं अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस में चला गया, तो I can easily say, rather than saying कि I got a bit emotional, I can easily say I got a bit nostalgic. Like this way we can understand this word. Nostalgia is a word like I got a bit of nostalgia. मतलब मुझे nostalgia हो गया, मतलब मैं उस nostalgic वाली feeling में चला गया. So this way we can understand. It's a very beautiful word. आप पता है बहुत सारे जो डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी मूवीज को प्रमोट करने आते हैं, एंड वो डांसिंग शोज क्या करते हैं कि उन एक्टर्स की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल डेट तक की एक जर्नी को एक डांस परफॉर्मेंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ट्रिब्यूट करते हैं. तो एक्टर्स बहुत बारी कहते हैं आई गॉट अ बिट ऑफ नॉस्टैल्जिया, मतलब वो उन डांस परफॉर्मेंस को देख के अपने पास्ट में चले जाते हैं एंड दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी and they are a bit sad as well because they understand the value of hard work, they understand the value of their past. That way and that time they use the word nostalgic. This is the best way to understand this word. So I hope आपको समझ में आया होगा. अब next word समझते हैं which is unwind. Okay, so the second word of today is unwind. Unwind जो word है ना वो बहुत easy है, पढ़ते हैं in a click समझ में आ जाएगा.
when you unwind, you relax and give rest to your mind. कुछ समझाने लायक है? Nothing. Whenever you guys gonna be unwinding yourself, you guys will be relaxing. Relax word है ना, उसकी सेंस देता है. और समझते हैं, Fun and Food Village is the best place to unwind in summers. मतलब whenever we gonna go to the Fun and Food Village in summers, we gonna unwind ourselves. We gonna rejuvenate. एक word मैंने बताया था, but the gravity of the word which is rejuvenate is very powerful. Like rejuvenate word हम तभी use कर सकते हैं when we are going to Fun and Food Village, when we are going to Shimla. Like हम सच में कहीं जा रहे हैं, but we cannot rejuvenate ourselves if we are just going for a walk. फॉर अ वॉक, जब भी हम अगर वॉक पे जा रहे हैं तो वी कैन अनवाइंड आवरसेल्व्स. दोनों एक ही रिलैक्सेशन या फिर एक ही एंजॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं, बट वी गोना यूज द रिजुनेट वर्ड जहां पे बहुत ज्यादा बड़ी बात हो, लाइक शिमला गए, फन एंड फूड विलेज गए. बट इफ आई कैनॉट से दिस थिंग, ओ आई जस्ट टुक अ बाथ टू रिजुनेट माई सेल्फ. नो, रिजुनेट वर्ड है तो वर्ड सही, बट उसकी जो पावर है, जिस इम्पैक्ट के साथ वो वर्ड आता है, विच इज वेरी हाई. बट आई कैन इजली से, ओ आई जस्ट टुक अ बाथ टू अनवाइंड माई सेल्फ. Like this way we can use this word. Now the third word which is very important, which is makeshift. फटाफट इसको समझते हैं. Next word is makeshift, and to understand this word makeshift, look at some photographs. Come back soon. हिंदी में एक सेंस होती है जुगाड़. जुगाड़, काम चलाने वाली चीजें, वही सेंस देता है ये वर्ड मेकशिफ्ट. इट्स एन एडजेक्टिव प्लस इट्स एन नाउन एज वेल. सो आई वोंट बी सेइंग, जैसे लड़के की ट्रांसलेशन होती है ना बॉय, लाइक लड़का मतलब बॉय, इंग्लिश में बॉय, ऐसी ट्रांसलेशन नहीं होती. लाइक इफ आई से कि जुगाड़ की जो इंग्लिश होगी वो मेकशिफ्ट होगी, नो. बट अगर इफ आई लुक फॉर वन पर्टिकुलर हिंदी वर्ड विच इज वेरी क्लोज टू द सेंस ऑफ दिस वर्ड विच इज मेकशिफ्ट, दैट वुड बी जुगाड़. अच्छा, पढ़ते हैं. मेकशिफ्ट थिंग्स आर फॉर टेम्परेरी यूज, मतलब बहुत ही कम समय के लिए हम उसको यूज करते हैं या फिर हमें करना पड़ता है. यूजली ऑफ पुअर क्वालिटी, मतलब कोई क्वालिटी वाइज नहीं होती, जस्ट दैट हमारी मजबूरी है, हम तभी यूज करते हैं. यूज बिकॉज नथिंग बेटर इज अवेलेबल एट दैट टाइम, मतलब यार उससे कोई बढ़िया चीज है ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है. दैट्स व्हाई वी have to use it because we don't have any other choice. एक example दूं, I mean, you guys gonna understand now. Nowadays my phone is my makeshift camera because my camera is not working properly. Means nowadays I'm using my phone as my camera because my camera is out of order. So just as a substitute, just as for temporary purpose, I'm using my camera. मतलब वैसे मैं करना नहीं चाहता, but it's just that मेरा कैमरा खराब है, it's out of order, so that phone has become my makeshift camera. Like कभी बार होता है ना, if I'm using बहुत ही कोई अजीब सा घटिया सा फोन एंड मेरे दोस्त कहें अबे तू ये फोन यूज करता है, तो I can just simply say oh it's just a makeshift. यहाँ पे makeshift as a noun यूज हुआ है. oh it is just my makeshift phone, यहाँ पे makeshift as an adjective यूज हुआ है. so I can just easily say oh come on, this is just my makeshift, my new phone is coming. Like this way we can use this word. So this is it for this video guys. Thank you so much for watching this video till here, and I'm pretty sure that you must have learned something new today. If you actually did, you could like this video and you can share your views in the comment section. And that is it. I'm Aman Maskeen signing off. As I always say, keep learning, keep growing, keep sharing, and I'm gonna see you at part number 17 where we're gonna learn some 3 or 4 new amazing words which you can add in your day-to-day vocabulary. It's Aman Maskeen signing off. Take care. Thank you.